A top story at this hour, Mamata Banerjee is going to be facing BJP's Priyanka Tibrewal in a big Bhabanipur prestige battle. Well, the TMC chief filed a nomination today. This is an election that Mamata needs to win in order to hold on to her chief minister office. Mamata is contesting the Bypoll after she lost by a whisker to her prodigy turned rival Suvendu Adhikari in Nandigram. BJP is going all out, all guns blazing against Mamata. Well, they have fielded Priyanka Tibrewal as the candidate against her. She is a lawyer which took on the Bengal government in the post-poll violence cases in the court. Tibrewal is the current vice president of the BJP's Yuva Morcha. BJP IT cell chief Amit Malviya has urged the people of Bhabanipur to defeat Mamata to stop what is said is Talibanization of Bengal. The Bhabanipur bypolls are to be held on the 30th of September and the results is going to be announced on the 3rd of October. पार्टी ने ये मेरे ऊपर विश्वास किया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भाजपा की जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की कैंडिडेट हूं। इसका कारण ये है कि आप सबने देखा है कि पिछले 5 महीनों में जो लड़ाई यहाँ हुई है उसमें जो लोगों ने मेरे ऊपर अपना विश्वास दिखाया है, जो शहीद परिवारों ने विश्वास दिखाया है, जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ उन्होंने विश्वास दिखाया है, जिन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया मैंने उन्होंने वो विश्वास दिखाया है। আইনি পথে তো সাধারণ মানুষই গেছে, ওখানকার লোকই প্রশ্ন করেছে কেন এই ধরনের নির্বাচন হচ্ছে। তো স্বাভাবিক, পার্টির তো আর কেস লড়ার কথা নাই, কিন্তু কেউ না করলে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়, মানুষই করেছেন। আমাদের লড়াই পুরোপুরি হবে, আমরা তো এখন নামিনি, এখনও ঘোষণা করিনি। তার আগে মমতা ব্যানার্জি পুরো মন্ত্রিসভাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন, বুঝতেই পারছেন বিজেপির ভয় কতটা। Well, it's a mega India Today exclusive interview. Nationalist Congress Party Chief Sharad Pawar, who is part of the UPA and also in alliance with the Congress and Maharashtra Vikas Aghadi government in Maharashtra, has dropped a big bombshell on the Gandhis. Pawar has said that Congress is like old zamindars of Uttar Pradesh who are without land, but the grand old party is still not realizing the truth. But Pawar, whose party NCP is a key ally in the Maharashtra Aghadi alliance with the Congress and the Shiv Sena in Maharashtra, did not stop there. He's also gone on to say that the Congress is no longer able to win votes unlike in the past. The NCP chief has said that Congress is weak as several leaders have deserted it. In other words, it is a pale shadow of its past. ममता बॅनर्जीला तुम्ही फेस करू शकता, चेहरा होऊ शकतात 2024च्या इलेक्शन मध्ये। तर लोक, मी काँग्रेसच्या लोकांना विचारतो ममता बॅनर्जी क्यों, हमारे पास राहुल गांधी है, असं जेव्हा हा जो तो पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षातला ॲव्हरेज सहकारी हे आपल्या नेतृत्वाच्या सोबती यत्किंचित सुद्धा कधी वेगळी भूमिका घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात। एक अहंकार आहे का अजूनही, की अजूनपर्यंत काय अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स आहे की जुनी काँग्रेस आहे? कसं आहे की मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते, लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या त्या मोठी शेती होती, जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्यात वाटल्या गेल्या, त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही। काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली। पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर जेव्हा बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक, तो म्हणतो की हे सगळं माझं होतं, आता नाही आहे। कुठे ना कुठे काँग्रेस जुनी जमीनदारी झाली। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात काय, उजाड गावाचा पाटील, तितकं काही म्हणत नाही, पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे। तिची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर पासून कन्याकुमारी काँग्रेस हो, पण ती होती, आहे नाही, ते होती हे ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे आणि ती ॲक्सेप्ट करण्याची मानसिकता जशी तयार होईल तशी जवळीक वाढेल। पण तुम्ही आता लेफ्ट आणि काँग्रेसचं उदाहरण दिलं, पण 2004 मध्ये जवळपास 4 वर्ष
लेफ्टच्या पाठिंब्यावरती काँग्रेस आणि UPAने सरकार चालवलं होतं. अशा पद्धतीचं हे अपोजिशन बंगाल आणि केरळमध्ये असताना सुद्धा तर ते सरकार त्यावेळेस चाललं होतं. ममता बॅनर्जी त्या सरकारमध्ये पण होत्या. त्याही होते प्रश्न तो नाही. पण त्यावेळेला काँग्रेस हे आत्तासाठी 40 लोक नव्हते. तर काँग्रेसची सेंट 140च्या पेक्षा सुद्धा जास्त होती. आज काँग्रेसची सेंट ही त्यामध्ये फार कमी आहे आणि सगळ्यांचीच कमी आहे. नाही, आपण एक महत्वाची गोष्ट आता म्हणाला, काँग्रेसची ताकद जी आहे ती कमी झाली. हा तुमच्या समोर मोठा, कारण कुठे ना कुठे शरदराव आपण काँग्रेसी आहात, तिथूनच तुमची सुरुवात झाली. आणि आज देशात असे 9 मुख्यमंत्री आहेत जे एका काळी काँग्रेसमध्ये होते. ममता बॅनर्जी घ्या किंवा इतर नेते आहेत, जगनमोहन रेड्डी घ्या. कुठे ना कुठे आपल्याला वाटतं का की ही आजच्या राजकारणात सर्वात मोठी जी बदल झाली आहे की काँग्रेसची ताकद एवढी कमी झाली आणि BJP वाढली आहे. त्याच्यामुळे जोपर्यंत काँग्रेस वाढत नाही तोपर्यंत मोदीजींना आणि किंवा BJPला कोण चॅलेंज आजच्या परिस्थितीत देऊ शकत नाही. की आपल्याला वाटतं की ही जे रिजनल पार्टीज आहेत ते एकत्र येऊन किंवा काँग्रेसचे ग्रँड कोअलिशन, जर जुने नेते परत आले काँग्रेसमध्ये तर ते चॅलेंज देऊ शकतील. काँग्रेस कमजोर कडी आहे का? देखील आता काँग्रेसचा नवाज सांगतो ना, हे जरी असलं ते काँग्रेस देशाच्या राजकारणात रिलेव्हन्स असणारा पक्ष आहे. आज 5-7 राज्यात त्यांची सरकार आहेत. 3 आणि 4-5 आहेत अलायन्समध्ये. कसे कळलं आहेत त्या ठिकाणी आहेत. तुम्ही BJP सोडल्याच्या नंतर व्यापक स्ट्रेंथ असलेला पक्ष कोणता आहे देशात? काँग्रेस आहे. पण आपल्याची जुनी काँग्रेस बघायची सवय, त्या जुन्या काँग्रेसच्या होती आजची काँग्रेस कुठेही नाही आहे. ही गोष्ट खरी आहे. त्याचं कारण ती क्षीण झालेली आहे. अनेक राज्यात त्यांचे लोक वाजून गेलेले आहेत. आणि जर या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं पर्याय उभा करायचा असेल, पर्याय कशासाठी? एक तर सत्तेसाठी. मी सत्तेसाठी पर्याय म्हणत नाही. मला पर्याय करायचे जे उभा करायचा असेल काही लोकांना मिळून, तर तो पर्याय देशात स्थिरता देण्याचा, देशाची जो काही ॲग्री कार्यक्रम असेल विकासाचा तो गतीने एक्झिक्यूट करण्याची कोच असलेल्या सगळ्यांची ती सामूहिक शक्ती देशाला पुढे नेणारी या पद्धतीची ती काँग्रेसची सरकार पाहिजे. आज ती नाही. Well, BJP and JDU have reacted to Pawar's statement linking the Congress to UP's zamindars. Listen in. देखो, बिना जनता के जमींदारी और बिना ज़मीन के जागीरदारी, तो ये जो बिना जनता के जागीरदारी और बिना ज़मीन के ज़मींदारी वाली जो ये घराने की पॉलिटिक्स है, ये घराने की पॉलिटिक्स पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुकी है. और ये घराने का घमंड जनता की जो ज़मीन है, जो पकड़ है, उससे कोसों दूर होती जा रही है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली रस्सी जल गई है, अभी भी बल नहीं गया है. मैं शरद पवार जी से असहमति रखता हूँ. ना तो वो जमींदार बचे हैं और ना उन पर महल बचा है. अब खाली वो झोपड़े की मालिक कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई है और उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है. अभी राज्यों में चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है. ये कह रहे हैं कि हम पुराना गौरव लौटाएंगे कांग्रेस पार्टी का. इसलिए वर्तमान सोच के साथ, वर्तमान नेतृत्व के साथ इसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन होगा उसकी संभावनाएं कम है. शरद पवार. Well, rumbles in the anti-Modi front now. Not just Sharad Pawar, who has shown mirror to the Congress, but also TMC's Abhishek Banerjee also took pot shots at the Congress when he was questioned by the ED in alleged coal scam case on Monday. Mamata Banerjee's nephew said, and I quote, "Trinamool Congress, unlike others, will not sell its spine or hide inside its home. If BJP thinks it can frighten TMC by doing all of this, if they think TMC will accept defeat like the Congress and other parties, we will fight more vigorously," unquote. This statement comes a month after Mamata met Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in Delhi in a bid to unite the opposition to put up a brave fight against the Modi government in the next Lok Sabha elections in 2024. पर बीजेपी को अगर लगता है कि इससे तृणमूल डर जाएगी, तृणमूल झुक जाएगी, तृणमूल हार मान लेगी, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह
कांग्रेस की तरह, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, या कोई और राजनीतिक दल की तरह घर में बैठ जाएगी, भाई हम और जोर जबरदस्ती के साथ आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे और हम वो हर राज्य में जाएंगे जहां आप लोकतंत्र की हत्या किया है। आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ दो। Trouble brews for Union Minister Narayan Rane's family. Pune police have now issued a lookout notice to Rane's wife Neelam and MLA's son Nitesh in cases related to unpaid loans from financial institution DHFL. A lookout circular is a notice which prevents a person from leaving the country. Neelam Rane owned Outline Properties, availed a loan of 25 crores from DHFL and the outstanding amount now is 27.13 crores. Nitesh Rane owned Neelam Hotels, had availed a loan whose outstanding amount is now 34 crores. Both loans were classified as NPAs and DHFL later approached the centre, which then issued directions to the state government to issue lookout notices. Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil has also confirmed the state had received a letter but ruled out any arrest in this case. मला असं वाटतं तर काहीतरी आर्थिक काहीतरी कर्ज वगैरे कुठल्या संस्थेचं राहिलेलं आहे, त्या कर्जामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे ती तक्रार गेल्यानंतर त्यांनी ती तक्रार राज्य सरकारला पाठवली. राज्य सरकारने ती संबंधित पोलिसांना पाठवली. त्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी तो निर्णय घेतला असा. Congress MP Rahul Gandhi's mega outreach in Jammu. Now, Rahul Gandhi has addressed party workers in Jammu on his final day of his visit to the territory. He's called himself and his family Kashmiri Pandits. He's also said that Congress party implemented many welfare schemes for them and the BJP has done nothing for Kashmiri Pandits. He's promised to do something for them. He was accompanied by veteran party leader Ghulam Nabi Azad. Rahul Gandhi launched scathing attack on the BJP, saying that Jammu and Kashmir has a composite culture and brotherhood, but BJP and RSS are trying to break that. He's also gone on to say the tourism and economy has been hit by the policies of the Bharatiya Janata Party. He also reiterated his demand of statehood to Jammu and Kashmir. On Thursday, Rahul Gandhi paid obeisance at Mata Vaishno Devi Shrine. He's also visited Kashmir on the 9th and 10th of August, paying obeisance at the holy shrines of Mata Kheer Bhavani and also Hazrat Bal, and held interactions with party leaders and activists. हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया, कॉम्पनसेशन देने की बात की थी, हमारी सरकार ने की थी, और बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं और मैं अपने भाइयों से कह रहा हूं, कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी मदद करके वैष्णव देवी के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है? कदाचित नहीं। आपने आज कहा कि दुर्गा मां की शक्तियां घट गई हैं नरेंद्र मोदी जी के काल में। राहुल जी, आप समझ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम समझाएं। मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की, मां वैष्णव देवी की शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती है। उनकी शक्तियां सदैव ही मार्गदर्शक शक्तियां होती हैं, वो पृथ्वी की सर्वोच्च शक्तियां होती हैं। इसलिए अपने छोटे राजनीति के कारण ये कहना कि माता की शक्ति क्षीण हो गई है, मुझे लगता है ये बहुत ही अनावश्यक कमेंट था आपका। और एक बात आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी की किसान उन्मुखी, गरीब उन्मुखी और मजदूर, मजलूम, उनके लिए जो नीतियां अपनाई गई हैं, उसके लिए अगर शक्ति किसी की बढ़ी है तो वो भारत मां की शक्तियां बढ़ी हैं। राहुल जी, आप तो सिकंजी पी रहे थे आज किसान के साथ, हमने देखा वो वीडियो भी। आपने अपनी सिकंजी दी है किसान बंधुओं को और उनसे आपने कुछ सवाल पूछे। क्या कहा उस किसान ने? उस किसान ने कहा ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी 6,000 रुपए डायरेक्टली मेरे अकाउंट में भेज रहे हैं, मैं तो सरकार को बड़ा धन्यवाद करता हूं। भोला भाला किसान था, वो भी मां के दर्शन करने गया था। वो जानता नहीं है कौन राहुल जी हैं और क्या आप पिलाने सिकंजी दे रहे हैं, क्या राजनीति आप कर रहे हैं। मगर जो उसकी मन की बात थी
आज उसने राष्ट्र के सामने, आज उसने भगवती मां के सामने, उनके दरबार में आपसे कह दिया, फिर भी आप नासमझ बने हुए हैं। मां भारती की शक्ति, हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ी है जब से मोदी जी की सरकार बनी है। राहुल जी, आपने फिर से दोबारा वही गलती किया। आपने कहा कि ये जो हाथ है, ये हाथ शिव जी का हाथ है, ये वाहेगुरु जी का हाथ है। आज जहां मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज गुरुद्वारों के लिए एक सिख सर्किट खोला गया है, उसके लिए हम सब भारतवासी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। वहीं तकलीफ होती है जब आप वाहेगुरु जी, हम सबकी संवेदनाओं का केंद्र हैं, वो आप कहते हैं कि उनका हाथ कांग्रेस का हाथ है। मुझे लगता है इसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करना चाहिए। शिव जी का हाथ कांग्रेस का हाथ है। ये इस प्रकार की बातें करके राहुल गांधी जी वही करते हैं जो वो दशकों से करते आ रहे हैं। वो दर्शा देते हैं कि राहुल एंड मैच्योरिटी कैन नेवर मूव टुगेदर। राहुल गांधी और परिपक्वता कभी भी एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राहुल विल ऑलवेज रिमेन टू बी राहुल। राहुल सदैव राहुल ही रहेंगे, वो अपरिपक्व ही रहेंगे और इसी प्रकार से करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। आज यह पुनः सिद्ध हो गया है। मुझे लगता है करोड़ों लोगों के भावनाओं को जो हताहत करने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई है, मां भगवती की शक्तियों को क्षीण बताते हुए, वाहेगुरु जी के हाथों को राजनीतिक हाथ बताते हुए, हमें लगता है कि आज राहुल गांधी जी पवित्र गणेश चतुर्थी के दिन आज गणेश जी उन्हें सद्बुद्धि दे और राहुल जी आज सभी संप्रदाय से क्षमा याचना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछें। Rahul Gandhi visiting the Vaishno Devi shrine actually completed his leg of the tour by actually addressing the workers, hitting hard at the BJP. Rahul Gandhi said that when we went to Vaishno Devi, we actually saw the shrine, and that is actually very significant because BJP, though says that it is very religious, is actually reducing the Shakti of the goddesses Mahalakshmi, Saraswati and Durga, and that's how Rahul Gandhi in turn tried to get an emotional reach out to the workers, saying that he is a Kashmiri Pandit, and when he met a delegation of Kashmiri Pandits, he could actually associate with them. So a very, very emotional speech Rahul gave to connect with the Kashmiri Pandits. On the other hand, it was a religious tour on day one and a political one which was barbed with attacks targeting the BJP and calling it hypocritical as far as religion is concerned. With video journalist Pawan, this is Mosmi Singh in Jammu for India Today. Fresh curbs have been imposed in Mumbai amid COVID surge as Ganesh Chaturthi celebrations start from today onwards. Well, amid the curbs, tensions between the Pandal officials of the Lal Baghcha Raja Pandal and also Mumbai police surfaced because of the barricading in this entire area, which led to delay in the Aarti and online darshan. Finally, after a few hours, the issue was resolved and the Aarti and online darshan started. Mumbai police have imposed section 144 barring an assembly of 5 or more people across the city between the 10th of September and 19th when the celebrations take place. Processions and visits to pandals have also been barred. Organizers have been asked for live coverage of the Aarti, though through social media platforms. Not more than 10 people are allowed to bring Ganapati idol. Only those who are fully vaccinated will be allowed to volunteer in the pandals. Authorities have also asked organizers to opt for artificial immersions of Ganapati idols. The new curbs come amidst a resurgence in the number of COVID cases in the city. Mumbai on Wednesday recorded 532 new infections for the first time since the 15th of July. गणपति विघ्न की कृपा पाने का कोरोना की पार्श्वभूमि में शासन ने इस बार गणपति उत्सव के लिए कुछ निर्बंध लगाया है। उसमें खास करके मुख्य दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन दोनों को मनाही है। लालबाग का राजा आप सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में एक दैवत की तरह माना जाता है और इसलिए बहुत भाविक दर्शन के लिए आते हैं। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने 144 CRPC के तहत ये ऑर्डर निकाला था और ये सुबह 10 लोगों की आरती और शाम को 10 लोगों की आरती के लिए परमिशन है
यहाँ कौन वीआईपी है, सेलिब्रिटी है या कॉमन आदमी है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। Well, let's take a look at the low-key Ganesh Chaturthi celebrations across India. Well, we're now at one of the most famous pandals in the city. This is in Baswangudi. This is the Bengaluru Ganesh Utsav. In fact, we are told that celebration, so basically the pujas, will begin only in the evening. As of now, work is going on. In fact, they're almost ready to make sure that everything is all right. Now, we must remember that the state government as well as the BBMP right here in Bengaluru has come out with a lot of restrictions as to the number of people who can come over here, keeping in mind that there is still a pandemic going on. In fact, you can clearly see a lovely idol of Lord Ganesha right over there. People, if they do wish to come over here, have to be completely vaccinated. They will see their certificates. Once they actually read the certificate that the person has been vaccinated, then only they'll be allowed over here. 5 to 10 people. Only 5 to 10 people will be allowed inside. Apart from that, let me just show you what's happening outside. There are barricades also placed over there, so people do not rush in. These are the restrictions that they have to follow. It's very, very important. So the ones who are not vaccinated as such will not be allowed inside the barricaded They will have to stand outside the barricade. Only the ones who are vaccinated will come inside over here. And very clearly he says that everyone, all the committee members are vaccinated. So this evening is when celebrations begin. This evening is when the pujas will take place at this very, very famous pandal in Bengaluru. With video journalist Shimoti Gurumat, Nolan Pinto for India Today. Some news just coming in. Protests in Vellore over Ganesh Chaturthi celebrations. Well, members of the Hindu Munani detained in Vellore after they tried to protest outside Vellore. Collectorate members of the Hindu Munani group tried to defy the ban on celebrations. In public protest with idols of Ganesha, the members tried to offer prayers outside the collectorate when police officials asked them to stop and abide by the state order. So there is a protest that is ongoing, in fact, in Vellore by members of the Hindu Munani who have been detained right now. They tried to protest outside the collectorate's office in Vellore. Well, they were trying to define the ban on celebrations and public protests. Idols of Ganesha, the members tried to offer prayers outside the collectorate's office when the police officials asked them to stop and abide by the state order. Well, the fifth and the final test between India and England has now been cancelled after India expressed apprehensions over playing the game at Old Trafford. There was already a lot of uncertainty over the Manchester test after India's second physiotherapist, Yogesh Parmar, had tested positive for COVID-19. And even though the game was given a go-ahead late on Thursday night, after all the Indian players tested negative, it was called off earlier today. England and Wales Cricket Board had earlier released a statement indicating that India had forfeited the match, but an amended version was soon put out which said that because of fears of a further increase in the number of COVID cases inside the Indian camp, visitors are regrettably unable to attend to field a team, in fact. There is still some amount of uncertainty over the result of the series. Reports suggested that the fifth and the final test will be played next year when India tours England for a limited over series. The BCCI, though, is yet to release an official statement on this matter. Or only just come back in this game. Meanwhile, India Today has accessed this letter that has been written by the BCCI to the ECB that highlighted their inability to play the fifth test. Let's give you a lowdown on what it really says. Well, this is the BCCI's letter to the ECB. Physiotherapist Parmar has come in close contact with Team India players. Safety and well-being of players severely compromised is what the letter reads. Discomfort and anxiety within members of Team India. There might be more cases during the fifth test. Playing the fifth test will compromise the health and safety of players. Have no option but to not participate in the fifth test. Hope we can mutually discuss to reschedule the test.